Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session where we will clear all the doubts related to the coaching aspect of UPSC. Whether coaching is required or not, which coaching to take, whether to come to Delhi or not, and whether to go for online coaching or offline coaching. So I hope by the end of this video, you have a little mental clarity on the entire coaching arena of UPSC. So the first question and the first most major question that is being asked is whether to take coaching or not. So for that, I'd say that it depends. See, there are two types of people who enter this UPSC journey. The first one is people with zero clue about UPSC like me. So I had to take coaching because that worked as a starting factor for me, just a starting push for me to get me initiated into UPSC. तो कोचिंग ने एक तरह से मुझे यूपीएससी में इनिशिएट किया. बट इफ यू आर समवन हु हैज सर्टेन बैकग्राउंड, हु हैज सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको गाइड कर सकें, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें. बहुत लोगों के सिबलिंग्स होते हैं, बहुत लोगों के सीनियर्स होते हैं. सो इफ दैट इज द केस देन डेफिनेटली कोचिंग कैन बी अवॉइडेड. ये बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोचिंग बस एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है और ज्यादा से ज्यादा कोचिंग एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे सकता है आपको. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा, बिकॉज अनलाइक आवर 11th एंड 12th क्लास कोचिंग्स ऑफ नीट एंड जेईई, यूपीएससी एक बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है, बहुत डायनेमिक एग्जाम है और इसमें स्पून फीडिंग बहुत ही लिमिटेड लेवल्स तक हो सकती है. सो अगर आप इस नोशन से आएंगे कि कोचिंग जाके आपको सब आ जाएगा और तुरंत ही इस एग्जाम के सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा. कोचिंग को एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह लीजिए अगर आपको लेना ही है. बट एट द सेम टाइम आई से दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस आउट कर देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether to come to Delhi or not. So as we all know that Delhi is the UPSC hub and we have Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar and these are literal hotspots of UPSC. So इसी notion के साथ मैं भी आई थी Old Rajendra Nagar and I shifted there and I stayed there for an year. So I talk about myself that staying in Old Rajendra Nagar for me particularly was not very fruitful. Because as I mentioned, I did not have many friends. I used to feel very depressed in Old Rajendra Nagar and मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी वहाँ पे. I would always feel very troubled in the head वहाँ पे. तो what happened that one day my parents came to visit and when they saw me they said just pack your bags and we are taking you from here. तो मैंने बैग पैक किए और मैं घर आ गई. एंड इनफैक्ट जब मैं घर आई दैट वॉज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली बिगैन स्टडीइंग प्रॉपरली, क्योंकि एक इमोशनल स्टेबिलिटी थी एंड मे बी स्टेइंग एट होम सूटेड मी मोर. बट एट द सेम टाइम आई से दैट बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ रूम ऑफ माई ओन इन माई हाउस, बट एट टाइम्स दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर आपके घर पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप डेफिनेटली दिल्ली आने का ट्राई कर सकते हैं. बट if you're someone who has a comfortable stay at home and आप दिल्ली आना चाह रहे हैं सिर्फ दिल्ली आने की वजह से, तो आप इसको आराम से इवेल्युएट करें एंड एनालाइज करें, क्योंकि कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो इज वेरी फाइनेंशियली ड्रेनिंग. दैट इज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड. तो जो भी सिचुएशन आपको लगती है उस हिसाब से आप डिसाइड करें. बट आई से दैट स्टेइंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर होम वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. सारी ही रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजकल, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. देयर आर कोरियर फैसिलिटीज, यू कैन गिव योर टेस्ट ऑनलाइन. मेंस टेस्ट सीरीज मैंने सारी ऑनलाइन दी थी, सो दैट वर्कड वेल फॉर मी. बट यू कैन डिसाइड व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज whether to go for online coaching or offline coaching. So I'd say that there are pros and cons of both. ऑफलाइन कोचिंग का ये प्रो रहता है दैट यू गो एंड गेट टू सिट इन अ क्लास एंड हैव दिस डेली शेड्यूल ऑफ फिजिकल लर्निंग अपार्ट फ्रॉम मेंटल लर्निंग. बट ऑनलाइन कोचिंग का ये फायदा है दैट यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. ट्रैवल टाइम बच जाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम बच जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आई थिंक फॉर मी हम बहुत बार टाइम वेस्ट ही कर देते हैं जब हम जाते हैं कोचिंग एंड वहाँ
we end up standing together and wasting a lot of time. So if that can get saved, then anything is fine. But I'd say online coaching is as good as offline coaching. Coming to the last aspect of which coaching is good. So I'd say that any and every coaching has good teachers, has good aspects and has not so good aspects. So for that, don't run behind anything in the market. जो भी आपको आपके लिए सूटेबल लगे, जिसमें भी आपको आपके सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिल रहे हों, आप वो कोचिंग ज्वाइन करें. बहुत ज़्यादा भागे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे, बहुत ज़्यादा फोमो ना फील करें कि मेरा फ्रेंड उस कोचिंग में जा रहा है बट आई एम ओनली गोइंग इन दिस कोचिंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे कोचिंग का मटेरियल और सारे कोचिंग का काम सेम ही होता है एक तरह से इस एग्जाम में, और आपको सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम क्लियर करना होगा. तो आप जिस भी कोचिंग में हैं आप उसमें खुश रहें, आप अटेंड करें क्लासेस एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीथिंग एल्स एंड नो नीड टू रन बिहाइंड ऑल कोचिंग्स. So that was all for today's session. If there's something more on which you need clarity, then put it down in the comments below. I'll try to answer them in the next video.